Hey everybody, this is Minesh and welcome to Modernizing Biz podcast. This show is all about business, marketing, and entrepreneurship, where I interview some of the greatest minds from around the globe who will share their experience with you, and that's how we're gonna help in modernizing your biz for free. Hey everyone, welcome back to another episode of Modernizing Biz podcast. I hope each one of you all doing great. So this particular episode will going to be a really special episode because we've been waiting to record this from past 4 or 5 months. Right. So on this episode we have Karunya Sharma. He was a computer science engineering background student. He's based out of Madhya Pradesh, India. Now he's the founder of a media company, Squeak Media, making him the youngest entrepreneur at the age of 19. He has also worked with Amazon India and became the director of Ninth Jagran Film Festival. That was the world's largest film festival, and he's also a TEDx speaker. So I hope, Karunya, that was the introduction that I have given you. We would like to know more about you from your mouth as well. Thank you so much, Manish. Thank you so much for such a wonderful introduction. I don't think I deserve this, but yeah. So tell me, how are you doing? I'm doing super great. What about you? It's all good. COVID के चक्कर में it's a little bit इधर उधर. बाकी it's all good. It's all good. So I've given you an introduction that I have framed from my end, but we all would like to know a little bit more about yourself from your mouth. So can you please elaborate what you're doing with your organization? Yes, yes, please. I run a company called Squawk Media Company. It's called Squawk Media Solutions Private Limited. We provide solutions that are quirky for your brand, and that's where the name came from, Squawk. We provide solutions that are quirky. So yeah, we provide branding, advertising, packaging, and marketing media solutions. We use various tactics of marketing and sales to increase the growth of any company. In narrowing down terms, I would love to say that we provide growth hacking solutions to other companies using the media as a weapon and the marketing is a front end. So yeah, that's it. That's what we do. Fabulous. Yeah. So I would love to know from you what is a journey, like where you got an idea that I want to build this organization, I want to help people and businesses so that they can grow their revenue model. So from where you got the idea, what is the journey of building a Squeak Media from scratch? Okay. So see, I was flying down from Mumbai to Bhopal. This was in 2018. Mm-hmm. And I was just wrapping up my Nine Jagran Film Festival, and I resigned from the duty of director because of some circumstances. 75% of the project was done from my end, but I resigned from the project because there were some internal issues, I would say. So then what happened, I got to know the various loopholes of the industry while working with this particular project because I got a lot of exposure, I got a lot of workload, I got a lot of learning on how to work on particular deadlines और ऐसी बहुत सारी चीजें हुई. तो आई वाज वर्किंग विद ऑलमोस्ट हाफ द बॉलीवुड देयर. तो वहां से एक Mm-hmm. जितना एक स्टार स्ट्रक मोमेंट था वो पूरा चला गया था. उससे पहले का जितना था कि कमिंग फ्रॉम भोपाल एंड नोइंग के बॉलीवुड में जाना है, बट जब आप जाते हो तो आप जब पहली बार किसी से मिल रहे हो तो इट्स लाइक आप स्टार स्ट्रक रहते हो बहुत ज्यादा कि मैं आज इससे मिला, मैं आज उससे मिला. बट व्हेन यू आर मीटिंग पीपल रेगुलरली फॉर 2 मंथ्स इन अ रो, तो आपका वो स्टार स्ट्रकनेस खत्म हो जाती है एंड यू आर फोकसिंग मोर ऑन योर वर्क. तो जब वापस लौटे, दिस आइडिया पॉप्ड अप इन माय हैंड कि ये कुछ गलत हो रहा है सीन. Mm-hmm. आईफा देखते हैं हम लोग फिल्म फेयर देखते हैं, हम लोग फिल्म फेस्टिवल्स देखते हैं अलग अलग. उसका जो बिहाइंड द सीन्स चल रहा है, उसका एफर्ट किसी को पता नहीं चलता है. इट्स वेरी स्मूथ. पीपल फील के ग्लैमरस वर्ल्ड है, सब कुछ बहुत ज्यादा ग्लैमरस है, बट ऑनेस्टली इट्स नॉट ट्रू. Right. तो टेक्निकली बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पे आपकी एंट्री फीस फॉर एनी आर्टिस्ट इज 3,000 to 5,000, समवेयर बिटवीन दिस प्राइस रेंज. आपको अगर एंटर करना है आपको. Okay. So they used to charge. Yes. So they used to charge if you, as an artist, you wanted to showcase your talent. यस, तो देयर आर वेरियस Yes. फिल्म फेस्टिवल्स जो कि 3,000 से 5,000 के बीच में अपना प्राइस रेंज रखते हैं एज द एंट्री फीस किसी भी Mm-hmm. पार्टिसिपेंट के लिए, किसी भी आर्टिस्ट के लिए. एंड टेक्निकली आई थॉट कि यहाँ पे एक मेजर मार्केट मिस कर रहे हैं वो लोग. फ्रॉम द रेवेन्यू मॉडल जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एक मेजर मार्केट वो लोग मिस कर रहे थे मिडिल क्लास इंडियंस का, जो कि टेक्निकली हर Okay. एक आर्टिस्ट
जिनमें ज़्यादा टैलेंट है, आई बिलीव कि वो अगले 10 साल में मिडल क्लास इंडियंस ही होने वाले हैं। उसका रीज़न ये है कि उन लोगों ने हसल बहुत ज़्यादा दिखा है। They have Right. seen their parents hustling, they have seen their forefathers hustling. So मतलब इफ दिस मेक्स एनी सेंस, तो आई रियली फील कि अगले आने वाले 10 साल में मिडिल क्लास इंडियंस जितने भी हैं, उनका हसल सामने आएगा और वो लोग कुछ करेंगे। लाइक नेजी है, डिवाइन है, बहुत सारे लोग हैं, हर एक Mm-hmm. इंडस्ट्री में कोई ना कोई ऐसा है। तो टेक्निकली ये सब चीजें सोचते हुए रेवेन्यू मॉडल यही था कि बहुत बड़ा मार्केट मिस कर रहे हैं बाकी सारे प्रोजेक्ट्स जो लोग चला रहे हैं उनका। तो ये मार्केट पकड़ते हैं, प्लस एक बहुत मेजर प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। अ फ्रेंड ऑफ माइन लिव्स इन द यूएस, तो ही होल्ड्स द ग्रीन कार्ड Mm-hmm. देयर। तो एक पहली चीज ये हो गई कि दो ग्लोबल मार्केट्स, इंडिया एंड द बिगेस्ट डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड, यूएस And और US. इंडिया, राइट। तो ये हमारे पास ओपन मार्केट प्लेस था कि यहाँ से हम लोग कर सकते हैं स्टार्ट एक प्लेटफॉर्म देने का। यूएस वालों को इंडिया का एक्सपोजर मिलेगा, इंडिया वालों को यूएस का एक्सपोजर मिलेगा। तो दिस वाज द होल थॉट Fabulous. प्रोसेस एंड इट वेंट अहेड। जहाँ पे लोग 3000 प्राइस रेंज रख रहे थे, वहां पे हम लोगों ने ₹250 से स्टार्ट किया। फ्यू फ्रेंड्स केम अलोंग विथ मी इन दिस आइडिया, और गाड़ी वहां से स्टार्ट हो गई एंड वी नेम्ड इट एज इट्स द फिल्म प्रोजेक्ट। एंड या, इट्स द फिल्म प्रोजेक्ट इज नाउ a segment of Squawk Media Company. Amazing, amazing. That's what, like, on the second of this podcast, I was just framed a question that, so how you are taking a Indian talent to the global market, right? So I got the answer as if now that you have one of your partner working in America, right? Yeah, So that's really nice. That's really nice for you. The way you have understand the market, the way you have identified the opportunity from the existing problems that are there in the market. So I would also like to know more about you. Like, at what point of time you got the spark? Like, तुम तो एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, like you can go out and do a job in a IT company, but you right. don't choose that path, right? You were like, I want to start my own business. So at what point of time you got this spark inside you that भाई मुझे ये सब नहीं करना, I don't want to be the part of the rat race, I want to do something that I love to do. ओके, सी, इंजीनियरिंग मुझे कभी भी नहीं करना था। एंड यूजुअली आज के Mm-hmm. टाइम पे जितने भी इंजीनियर्स पास आउट हो रहे हैं पिछले 5 साल से, उनमें से किसी को भी इंजीनियरिंग नहीं करना है। इट्स ऑल अ रैट रेस, अ पेरेंटल प्रेशर, आई वुड से कि एक सेफ लाइन है, बैकअप ले लो, एक डिग्री हो जाएगी। तो Mm-hmm. टेक्निकली जब डिग्री हो जाएगी की बात आ रही थी, तो माय फादर वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ मी। ही आस्क्ड मी कि अगर तुम्हें Mm-hmm. सिनेमेटोग्राफी का कोर्स करना है, व्हेन आई वाज पासिंग आउट माय 12th क्लास, तो लुक आउट फॉर एनी यूनिवर्सिटी जहाँ पे तुम्हें लगता है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो, अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो गो हेड। बट मेरा मन ये तब भी रहेगा, एग्जैक्टली दैट टिपिकल इंडियन पेरेंट्स लाइन, के मेरा मन ये रहेगा कि इंजीनियरिंग करना, बिकॉज माई होल फैमिली बिलोंग्स फ्रॉम द इंजीनियरिंग Right. बैकग्राउंड। तो बस वो लाइन थी एंड आई थॉट, आई गिव सेवरल थॉट्स ऑन दैट। और मुझे लगा कि मे बी सिनेमाटोग्राफी इज नॉट द ओनली थिंग जो मैं लाइफ टाइम करना चाहूंगा। इट इज वन ऑफ दोज थिंग्स जो कि मैं करना चाहूंगा, बट नॉट द ओनली थिंग। तो वहां से फिर समझ आया कि इंजीनियरिंग कर लेते हैं, अभी के लिए सेफ ऑप्शन है। देन 2016 बैच का था मैं, 2016 स्टार्टिंग बैच। आई वाज द 2020 पासिंग आउट बैच, अभी हम लोग पास आउट हुआ। तो टेक्निकली इंजीनियरिंग करते करते फर्स्ट ईयर निकल गया जैसे तैसे। मैं फिल्म्स बना रहा था। देन सडनली अगस्त ऑफ 2016 में एक चैलेंज आया था, स्वच्छ भारत शॉर्ट फिल्म चैलेंज। सो हेल्ड बाय Yeah. नरेंद्र मोदी के अंडर में हुआ था वो। तो Mm-hmm. टेक्निकली वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए मेरी मदर ने बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया मुझे, एंड उसमें पार्टिसिपेट किया एंड लकीली वी गॉट द अप्रिसिएशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट पर्टिकुलर शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री। तो वहाँ से फिर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला कि ठीक है, हो सकता है, कुछ हो सकता है इस चीज़ में भी, क्योंकि इससे पहले मैं सिर्फ म्यूज़िक कर रहा था। अम, Okay. तो एक लाइन सीधे चेंज हुई म्यूज़िक से फ़िल्म मेकिंग की। तो कैमरा भी मैंने इसीलिए लिया था पहले, क्योंकि मुझे म्यूज़िक वीडियोज़ खुद के रिकॉर्ड करने थे। देयर वाज़ नो पॉइंट कि Mm-hmm. मैं कैमरा फ़िल्म मेकिंग के लिए ले रहा था। मैंने 11th क्लास में कैमरा लिया था, क्योंकि मुझे खुद के म्यूज़िक वीडियोज़ रिकॉर्ड करने थे। हर बार 10,000 15,000 बक्स नहीं देने थे किसी भी सिनेमेटोग्राफर को Right. रिकॉर्ड करने के। Mm-hmm. तो वो एक मिडल क्लास मेंटालिटी से स्टार्ट हुई चीज़, एंड वहाँ से फ़िल्म मेकिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। एंड देन फर्स्ट ईयर पूरा ऐसे ही गया कॉलेज का। सेकंड ईयर में जब मैं आया, तो मैं बहुत सारे फ़िल्म फेस्टिवल्स के लिए अप्लाई कर रहा था, जूनियर सिनेमेटोग्राफर के रोल पे, जूनियर एडी के रोल पे। एंड वन डे, लाइक वन फाइन डे, हार्ड वर्क पेड ऑफ, और एक कॉल आया मुझे मुंबई से, फ्रॉम द जागरण ग्रुप।
और वहाँ से उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया था जूनियर सिनेमेटोग्राफर के रोल के लिए। बट दैट कॉल Amazing. वाज़ सपोज्ड टू बी ऑफ 5 मिनट्स, 5 मिनट की कन्वर्सेशन होनी थी। बट टेक्निकली उन लोगों को मेरा पता नहीं, उन लोगों को शायद मेरा क्वेश्चनिंग इतना ज़्यादा पसंद आया है, जो भी हो, हम लोगों का कन्वर्सेशन 1 घंटे चला और Oh 1 my घंटे God. बाद आई गॉट अ क्वेश्चन फ्रॉम देयर एंड कि माय सीनियर वुड लाइक टू टॉक टू यू, तो आप कब फ्री हो? तो मैंने बोला राइट नाउ इफ इट्स पॉसिबल। तो उन्होंने कॉल ट्रांसफर किया, वहाँ पे मेरी जागरण में सीनियर से बात हुई एंड या आई वाज़ Mhm. ऑनबोर्डेड एज़ द डायरेक्टर डायरेक्टली। दे सेड कि वी विल टेक यू ऑन अ ट्रायल बेसिस, कम टू मुंबई, फ्लाई टू मुंबई और यहाँ पे इफ एवरीथिंग गोज़ वेल तो यू आर द डायरेक्टर फॉर द होल प्रोजेक्ट। एंड आई वाज़ लाइक सुपर अमेज़्ड कि एक कॉल पे ये तो कंप्लीटली कुछ और हो गया। तो Hmm. लाइक दिस फ़िल्म मेकिंग की जर्नी हुई एंड वही मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम वहाँ से वापस आते Yeah. टाइम पर्सपेक्टिव्स चेंज हो गए थे कि फ़िल्म मेकिंग इज़ नॉट द ओनली थिंग, इट इज़ वन ऑफ दोज़ थिंग्स जो मुझे पसंद है, बट शायद इसका बिज़नेस एंड ज़्यादा पसंद आ रहा है मुझे। Right. Amazing. Amazing story. So, what you was feeling at that moment, jab you got the news that you need to direct the whole show instead of being a cinematographer? See, honestly, I never heard of the Jagran Film Festival anytime before in my life. So I was Hmm. like, I was eating my biryani regularly on my sofa, और मेरी फैमिली यहाँ पे नहीं थी, तो I was sitting with a friend, हम लोग बिरयानी खा रहे थे, and suddenly ये कॉल आया और मुझे लगा कि होगा, ऐसा ही कुछ होगा। तो थोड़ा-सा मेरे फ्रेंड ने साइड में लैपटॉप पे रिसर्च करना स्टार्ट किया कि जागरण फिल्म फेस्टिवल क्या है? एंड ही वाज़ लाइक, ब्रो इस पे अमिताभ बच्चन की फोटो है। तो वहाँ से आई वाज़ लाइक कि ओके ठीक है, अब अब मैं समझना आ रहा हूँ पड़ेगा। मुंबई. हाँ, हाँ, तो वहाँ से वो क्वेश्चनिंग मेरी स्टार्ट हुई कि व्हाट डू यू गाइस डू? व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी? तो वहाँ से बातें हुई, टेक्निकल बातें हुई, थोड़ा लाइक वो लाइक Hmm. एन इंटेरोगेशन टाइप का किया उन लोगों ने, नॉट इवन एन इंटरव्यू कि क्या करते हो, कैसे करते हो, अपना वर्क प्रोफाइल भेजो और या इट वाज़ लाइक ब्रिलियंट कि हार्ड वर्क पेड ऑफ Yeah. वाला सिचुएशन पूरा। So, what you learn from this one moment, one we can call it a life-changing moment. What you learn from it? Yeah, we can definitely call it my life turning point, we can call it a turning point. तो Yeah. Yeah. लर्निंग काफ़ी सारी मिल गई उस एक कॉल से। नंबर 1, Hmm. नेवर रश टुवर्ड्स एनीथिंग इन लाइफ, सबसे बड़ी लर्निंग जो कि मैं कॉन्ट्राडिक्ट करूँगा, क्योंकि आई वाज़ अमेज़्ड बाय सीइंग अमिताभ बच्चन जी की फ़ोटो। आई वाज़ अमेज़्ड बाय सीइंग Right. वेरियस अदर बॉलीवुड स्टार्स की फ़ोटो। बट अगर मैंने थोड़ा-सा और बैकग्राउंड रिसर्च किया होता तो मुझे पता होता कि मैं जिस लेवल पे जा रहा हूँ, मैं एज़ अ डायरेक्टर जा रहा हूँ, तो मुझे टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें वो करनी पड़ रही थी, जो कि टेक्निकली मेरे फ़ील्ड ऑफ इंटरेस्ट की नहीं थी। तो लर्निंग एक ये थी कि आप लाइक वो कहा जाता है ना कि एनीथिंग दैट Mhm. शाइन्स इज़ नेसेसरीली नॉट गोल्ड, तो ऐसा कुछ Right. कहावत है। तो शायद एक वो मेजर लर्निंग थी कि मुझे पहले पता करना चाहिए था कि वो प्रोजेक्ट पूरा क्या है, कौन-सी 18 सिटीज़ में ट्रैवल करेगा एंड बट या अनदर मेजर लर्निंग आई गॉट टू लर्न कि कैसे कम बजट पे कितना ज़्यादा काम करके दे सकते हो आप किसी को, क्वालिटी कैसे डिलीवर करनी है एंड वेरियस अदर थिंग्स। Okay, amazing. So, if you the moment you jump into the field of entrepreneurship, so will take you after like 6 or 7 months when you got the idea of setting up your own organization. So you're going to face a lot of challenges, right? You're from an engineering background. You राइट। haven't read about business, haven't learned about anything related to business. Now starting something from your own, from scratch, your own organizations. What are the challenges you have faced as an entrepreneur back those days at the early young age? What are the challenges you have faced? ओके, सो आई वाज़ 17 व्हेन आई वाज़ वर्किंग ऑन दिस आइडिया ऑफ इट्स द फिल्म प्रोजेक्ट, और जैसा कि मैंने Hmm. आपको बताया कि कॉम्पिटिशन उस टाइम पे ज़्यादा था नहीं। फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मैं बिल्कुल कहूँगा मुझे था, क्योंकि एक मेजर फिल्म फेस्टिवल के बाद वी वर द सेकंड पीपल जो कि ऐसा कुछ कर रहे थे, दैट टू प्राइज़ रेंज सीधे हम लोगों ने कट कर दिया था। तो दैट वाज़ अ फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज हम लोगों के लिए। उसके अलावा चैलेंजेस में यार इट्स ऑल अबाउट कि लोग समझते नहीं हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली है क्या? तो सबसे बड़ा Right. चैलेंज लोगों को समझाना रहता है। क्योंकि आप जब कॉलेज में जाते हो, आप कॉलेज में आपको अपने टीचर्स को, अपने फैकल्टीज़ को समझाना पड़ेगा कि व्हाट एम आई डूइंग विथ माय लाइफ? क्योंकि वो सेशनल्स Mhm. नहीं देंगे, वो आपको अटेंडेंस नहीं देंगे। तो चैलेंजेस बेसिक्स अगर मैं बोलूँ तो द बेसिक चैलेंजेस वर टू कन्विंस एवरीवन दैट आई वांट टू परस्यू दिस थिंग।
the first challenge. Mm-hmm. Another challenges are of bootstrapping the whole thing, क्योंकि फंडिंग की रिक्वायरमेंट मुझे लगी नहीं स्टार्टिंग में उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे. तो टेक्निकली बूटस्ट्रैपिंग इट वाज अ वेरी रिस्की थिंग, क्योंकि जिस इंसान ने, जैसा कि आपने कहा, ना एमबीए किया है ना कुछ बिजनेस की पढ़ाई की है, वो कैसे रिस्क कर ले अपना पैसा. तो टेक्निकली बट आई हैड दिस गट फीलिंग, और मैं गट फीलिंग्स के साथ बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ कि इफ यू हैव द राइट इंट्यूशन फॉर द राइट थिंग, तो गो हेड विथ इट. एट मैक्स आप फेल करोगे, बट एटलीस्ट आपको रिग्रेट नहीं Mm-hmm. रहेगा कि यार मैंने करके ही नहीं देखा. क्योंकि एक बहुत फेमस सेइंग है कि हर एक लाइफ स्पैन में हर एक इंसान को $7 मिलियन आइडियाज आते हैं, लेकिन Oh my लोग God. करते नहीं हैं. हाँ, तो Yeah. अकॉर्डिंग टू अ स्टडी ऐसा होता है. तो आई एम वेरी अफ्रेड कि मेरा $1 मिलियन आइडिया कब मैं मिस आउट कर जाऊँ लाइफ में. तो आई नेवर रिस्क इट. मैं कर लूंगा जब भी कुछ होगा. Right. तो So we relate with this over here. Like even for each one of us will set a newer resolution, right? So my newer resolution was like I just wanted to focus on one word, that is execution. Like जो भी राइट, idea आएगा, whatever it is, a small baby step, I'm going to take it at any cost. Yeah. राइट, So 100%. yeah, एंड आई बिलीव people usually say कि first think then do. I believe first do then think. जो होगा देख लेंगे. exactly. क्योंकि अगर आपका कुछ मेजर लॉस नहीं है, मतलब अब जब मुझे फाइनेंशियल, लीगल एंड बिजनेस टर्म समझ में आते हैं, तो अगर मैं वैसे फ्रेम करूं इस चीज को, अगर आपकी लाइफ का 51% स्टेक्स दाव पे नहीं लग रहा है, अगर आप 50 या 49 पे हो, गो हेड विद इट. Okay, got या. it. That you have learned a lot of things related to startup and business back then. या. Okay, so any piece of advice you wanted to give to the person who is at your position at the age of 17? What are your learnings from the challenges based out of that? If any piece of advice you wanted to give to a 17-year-old who don't wanted to do the engineering, or who don't wanted to get caught up in the rat race, they wanted to do something that they love to do. So what will be that advice that you wanted to give to them? I'll say jump in the ocean. Don't be afraid कि मुझे तैरना नहीं आता. अरे, तो Mhm. अगर आपको तैरना नहीं आता एंड इफ यू आर लेफ्ट इन द मिड ऑफ द पैसिफिक ओशन, तो आप टेक्निकली तैरने की कोशिश करोगे. आप सीधे ये नहीं बोलोगे कि मुझे तैरना नहीं आता. तो आई से जंप इन द ओशन. आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा. और अगर आप उस रिस्क को नहीं ले सकते हो, तो टेक्निकली डू द जॉब, बिकॉज इट्स मोर सिक्योर थिंग. लोगों को आजकल बहुत ज्यादा आई विल से कि एंथुजियाज्म है इस चीज का, या फिर मे बी अभी ये नया ट्रेंडिंग हो गया कि स्टार्टअप में या तो काम करना है या स्टार्टअप खुद का करना है. कॉर्पोरेट से लोग भागना चाह रहे हैं. Mhm. बट मुझे वो चीज समझ नहीं आ रही है ऐसा क्यों कर रहे हैं. Exactly. क्योंकि अगर आपको स्टार्टअप जेन्युइनली करना है, तो दो रीजंस होने चाहिए मेरे ख्याल से. मे बी कंप्लीटली गलत हो सकता हूँ मैं, बट मेरी Mhm. अंडरस्टैंडिंग है कि या तो आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसको आप जेन्युइनली सॉल्व करना चाहते हो, या फिर अगर ऐसा नहीं है, तो टेक्निकली आपका बहुत स्ट्रांग बिलीव होना चाहिए कि मुझे स्पेसिफिक फील्ड में कुछ करना है, इस फील्ड के लिए कुछ करना है. असाइड फ्रॉम दीज टू रीजंस, अगर आपके दिमाग में ये है कि Right. मेरे से जॉब नहीं हो पाएगी, मेरे से 9 to 5 नहीं होगा, तो मैं एक स्टार्टअप कर लेता हूँ, तो ब्रो यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग. क्योंकि वहां पे आपको 9 to 5 नहीं करना, वहां पे आपको 24/7/365 करना ही पड़ेगा. जंप इन ओशन. Yeah. So I'll sum up your one point that, and for anyone who wanted to start their own business, they need to focus on one thing. Like what is the problem we are solving? What the problem? What my venture will going to solve? What impact it will going to bring in the society? Either it's 0.01%. So that's come down to the other point. What problem exactly your business is solving, man? ओके, अमेजिंग क्वेश्चन. ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग, ये सब एक हट के अंदर प्रोवाइड करना, एक शेल्टर के अंदर इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस एंड होलिस्टिक मीडिया सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का काम है. अगर मैं इसको लेमन टर्म्स में बोलूं फॉर द ऑडियंस, बेसिकली लेट्स से Mhm. मिनिश आपकी एक कंपनी है, लेट्स से आप पॉडकास्ट बनाते हो, आपको पॉडकास्ट की ग्रोथ करनी है, Right. ठीक है. तो राइट नाउ डिजिटल मीडियम इज द बेस्ट मीडियम. मतलब टीवीसीज के अलावा, Mhm. टीवीसीज अभी भी 70% बजट ले जाते हैं लोगों की मार्केटिंग का, जो जाइंट्स है उनका. उसके बाद प्रिंट मीडिया आता है, देन देयर इज डिजिटल. बट लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि बजट भले ही 30% आ रहा है डिजिटल के पास, बट क्राउड इस टाइम पे 70% है डिजिटल मीडियम का. अगर आप टीवीसी पे एक Mhm. चीज दिखा रहे हो या आप प्रिंट मीडिया में एक चीज दिखा रहे हो,
तो दैट इज गोइंग टू गिव यू अ ग्रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लेकिन आपने वो चीज अगर इंस्टाग्राम पे शोकेस की, मैंने आपका अगर मैं पॉडकास्ट बोलूं, वी ऑल्सो प्रोवाइड पर्सनल ब्रांडिंग Mhm. सर्विसेज फॉर पीपल लाइक यू, फॉर पीपल लाइक मी, कि हम अपने आप को एक पर्सनल ब्रांड कैसे बनाएं। तो it's very simple. Right. We will handle your Instagram, we will handle all your social media, we will do photography, motion pictures, videos, we will provide advertisements and every other thing जो भी आपको चाहिए. And there's this breakdown, like आपने filter copy के बारे में सुना होगा, right? Yeah, yeah, I've heard about it. या तो फिल्टर कॉपी बेसिकली 7-8 मिनट का एक कंटेंट बनाते हैं जिसमें वो अपना एड प्लेसमेंट कर देते हैं, राइट? Mhm. लोगों को पता भी नहीं चलता है कि वो एक एड देख के गए हैं, जबकि उन्होंने पूरा एक एडवर्टाइजमेंट ही देखा है। दैट इज कॉल्ड द फ्रंट एंड मार्केटिंग। द बैक एंड मार्केटिंग इज कंपनीज लाइक ओगिलवी, ब्रिटेन, Yeah, यूएस, यूके के मार्केट रूल कर रहे हैं एंड वो इंडिया में भी अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो टेक्निकली ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग एक एडवर्टाइजमेंट बनाया, लेट्स से गार्नियर का एड है, गार्नियर के एड में आपको जॉन इब्राहिम याद रहेगा, आपको गार्नियर का प्रोडक्ट याद रहेगा, आपको कभी ये नहीं पता चलने वाला है कि वो किस एजेंसी ने बनाया था। दैट इज द बैक एंड मार्केटिंग। उस एजेंसी को सिर्फ पैसे से मतलब है, वो आपको एडवर्टाइजमेंट बना के देगा। तो व्हाट आवर कंपनी इज डूइंग, वी आर इन द नीश ऑफ दीज टू। हम इन दोनों के बीच के मार्केट को पकड़ रहे हैं एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड मार्केटिंग सर्विसेज अंडर वन रूफ, ताकि आपको अच्छा देयर इज दिस डॉट द hmm. फुल स्टॉप आफ्टर आवर नेम स्क्वर्क मीडिया कंपनी। तो स्क्वर्क के लास्ट में एक फुल स्टॉप है एंड दैट फुल स्टॉप डिफाइंस के दिस इज द फुल स्टॉप फॉर योर सर्चिंग। अगर आप हमारे क्लाइंट बनते हो तो आपके सारे सर्चेस खत्म होते हैं, दैट्स इट। Okay, you don't need to go anywhere apart from us. या सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। Cool. I've seen that no one is providing any sort of personal branding support. So I've been looking out for few mentors. So I've found out that there are few people who are doing in the metropolitan cities like Mumbai, Hyderabad, Bangalore. Mein to hai, but if you या talk about tier two cities, tier three cities, like there's no one who is going to help this out. So if you talk about tier two cities that you are dealing in, so that's a really nice idea. And basically you are bridging the gap between the organization and how they're going to market their product. So what do you think, what is your observation after this covid period, if we look at this current scenario, तो लोग कितना बजट स्पेंड करना चाह रहे हैं on this thing, on marketing? What do you have observed? इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, क्योंकि कुछ Mm-hmm. लोग इस टाइम पे लेट्स से यूनिवर्सिटी, स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी स्कूल्स, दे आर सर्टेन पीपल जो कि इस टाइम पे काफी ज्यादा अच्छे लेवल पे बजट स्पेंड कर रहे हैं। देयर इज अ रीजन, क्योंकि उन लोगों का बहुत सारा बजट जो कि इलेक्ट्रिसिटी में जाता था, जो कि बस ट्रेवल्स में जाता था, वो सब कुछ बच रहा है। तो दे आर विलिंग टू स्पेंड कि ठीक है, ये पैसा वैसे भी जाता ही, तो वी आर स्पेंडिंग इट इन अ मार्केटिंग जोन। नाउ कमिंग टू जो लोग स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, तो स्पेंड इस टाइम पे कोई भी नहीं करना चाहता है। जो मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट दिया वो भी Mm-hmm. कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्योंकि अगेन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। जो करना चाह रहे हैं उनके पास सेविंग्स काफी हो चुकी हैं इस पीरियड में, वो अच्छे से कर रहे हैं। जो नहीं करना चाहते हैं वो टेक्निकली नहीं ही कर रहे हैं, मतलब दे आर स्टिकिंग टू के इफ आई गिव यू अ फिगर कि अगर वो 22% पे अपनी मार्केटिंग कर रहे थे लास्ट ईयर, तो वो इस बार चाह रहे हैं कि उनको रिजल्ट सेम मिल जाए at let's say 12,000, and that's not practically possible. Right. Okay. So yes. So majorly there's a huge impact in the market, in the field of marketing. So if we look at the scenario, current scenario, जहाँ पे हर चीज it's on social media, it's on the social media where almost 70% of attention is there, as you have spoken already. Hmm. So what do you think? Television ads are still the source where where a medium-sized business can promote their services. Like, because I've seen that in this situation, many big companies stop their advertisement campaigns on televisions. So according to what is the future of TV advertisements as if now for upcoming 1 or 2 year? See, for TV advertisements, वो अभी लंबे टाइम तक, if I talk about 10 years down the line, Hmm. they are going to be there, और वो अच्छे खासे बजट पे रहेंगे। दैट्स फॉर अ रीजन एंड वो पुराने मार्केटर्स ने एक ट्रेंड सेट किया है जिसके पीछे एक बहुत प्यारा लॉजिक है। अगर मैं एकदम लेमन टर्म्स में बोलूँ मनीष आपको, Hmm. आपके घर पे अगर टूथपेस्ट आना है, आपके घर पे अगर झाड़ू आना है, तो या फिर आपके घर पे पापड़ आना है, Hmm. तो वो आप लाएँगे या आपके मदर लाएँगे? Majorly my लाइक mom. टेक्निकली चॉइस किसकी रहेगी? Majorly मेजरली mom. योर मॉम, राइट? मेजरली योर पेरेंट्स। लेट्स से इस टाइम पे अपनी एज ऐसी हो गई है, वी आर 21, 22, कि वी गो टू द सुपरमार्केट्स एंड डू ऑल द स्टफ, बट रिगार्डलेस ऑफ दिस फैक्ट,
जो छोटे बच्चे हैं घरों में, Mhm. लेट्स से चिल्ड्रन ऑफ 8-10 ईयर ओल्ड, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो लोग वो एडवर्टाइजमेंट्स देखने वाले हैं बैठ के Okay. टेलीविजन्स पे, Yeah. अगले 10 साल आने वाले पे। तो उनकी मम्मियाँ डिसाइड करेंगी कि पेप्सोडेंट आएगा घर पे या कोलगेट आएगा। Mhm. द बच्चा इज़ नॉट गोइंग टू डिसाइड। तो देयर इज़ दिस रीज़न कि टीवीसीज़ का एंड अभी तो नहीं हो रहा है एनी टाइम सून, बट हाँ, अकॉर्डिंग टू माय प्रेडिक्शंस 50-50 हो जाएगा बजट बहुत जल्दी आने वाले टाइम Okay. में, फॉर डिजिटल मार्केटिंग एज़ वेल एज़ टीवीसीज़। Okay. And if we look at the 25 years down the line, there is a case that it might be the only 10% where they're standing right now. What do you say? Yeah, I believe in that fact because according to me, 25 years down the line, जितना स्पीड से टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, Mhm. आई बिलीव कि टीवी शायद एग्जिस्ट नहीं करेंगे उस मोमेंट पर। Exactly. I think so. अ, TV would be there. We won't call it a television, we'll call it a screen, LCD or LED, whatever technology might राइट, be at that time. Yeah. 100%। Cool. That's a really great insight that we have jumped into it. And there is one more vertical of your organization, that is personal branding. So this term has provoked in 2019 or 20 in India specifically. So what do you say? What do you Yeah. think? What is the future of personal branding as if now? If you look at 10, 15, 20 years from now. See, these are certain trends, Manish. Mhm. पर्सनल ब्रांडिंग हुआ, डिजिटल मार्केटिंग हुआ, इंडिया में कोई भी चीज़ आती है, अगर वो एक बार बूम चली जाए, तो वो रहती है 5 से 7 साल मार्केट में। उसका रीज़न ये है पॉपुलेशन, Yeah. क्योंकि एक तरफ कोई भी भागा, उसके पीछे और 400 लोग जाते हैं, उनके पीछे और 4 लाख लोग जाते हैं। तो वो बूम पे चली जाती है बेसिकली। लाइक डिजिटल मार्केटिंग ऐसी चीज़ थी जो हमेशा से थी आस-पास, बट वो टर्म कॉइन हुआ अभी कुछ सालों पहले इंडिया में, और अभी सब लोग डिजिटल मार्केटर्स हैं। Right. तो हाँ, राइट? तो व्हाट आई थिंक 20 years down the line, maybe I don't know, I can't predict this thing, but Mhm. it's going to be fine if I'm allowed to say that. If you look at the future of personal branding, so all the brand that are emerging, you as a brand, me as a हुँ, brand, so what do you think, what will be our future, what will be the future of personal branding from 2021 to 2036, let's say for 36? So what is the future? This field will still exist in the market, or I or guy, what will be the case? आई फील कि ये फील्ड विल रिमेन देयर, बट जो बूम पे है इस टाइम पे, एवरीवन वांट्स टू बी इनटू द पर्सनल ब्रांडिंग सेक्टर। किसी को पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, किसी को करवानी है, तो ये रहेगा कुछ साल, 5 साल, मे बी 10 साल, बट उसके बाद ये नीश में नहीं बचेगा। ये मार्केट में फैल जाएगा और सब लोग या तो कर रहे होंगे या करवा रहे होंगे। तो टेक्निकली तब तक कुछ नई चीज़ आ चुकी होगी। जैसे लेट्स से पर्सनल ब्रांडिंग इज़ समथिंग, ये टर्म अभी-अभी कॉइन हुआ रिसेंटली, Hmm. बट अगर देखा जाए तो जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी पर्सनल ब्रांडिंग्स हो ही रही हैं Exactly. फ्रॉम लाइक ईयर्स एंड ईयर्स, Hmm. अगर नोटिस किया जाए इस पैटर्न को। तो टेक्निकली कॉइन हुआ है ये टर्म, एंड या लेट्स होप कि लंबे टाइम में रहे मार्केट में। बट अकॉर्डिंग टू माय प्रेडिक्शंस 15 साल में ये वर्ड कहीं खो जाएगा। बाकी कुछ नया वर्ड आएगा जो कि सेम चीज़ कर रहा होगा इम्प्लीमेंट। Okay, amazing. So let's discuss what is the future right now, because I know what is the future, as if now personal branding itself holds. But अगर हम देखें हमारी एज में there is very few people who are aware about this. और अगर हम जाते हैं हमारे पेरेंट्स के पास, let's take an example of me. So I was having a conversation with my dad. So he was like, podcast क्या होता है, what you're doing, and like how are you going to make money? राइट, Then I showed राइट। him the figures of like Joe Rogan, Tim Ferriss. So वो कितना पैसा कमा रहे just by recording their audio platforms, just by putting content on their podcast. So according to you, what is the future of personal branding in this era? What is, do people can like take this as a full-time career? या आई थिंक सो, बिकॉज़ देयर आर सर्टेन पीपल्स जो कि सेवरल लोग हैं, जिनको मैं जानता हूँ, जो कि मेट्रोपॉलिटन्स में है, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, एंड दे आर डूइंग प्रीटी वेल। Hmm. और यूजुअली लोग आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं ना, वो अपना नीश नहीं पकड़ रहे हैं। जैसे जो लोग पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं ना, वो लोग मार्केटिंग के बाकी एंड्स भी कर रहे हैं या करवा रहे हैं। Hmm. तो टेक्निकली आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप इन पर्सनल ब्रांडिंग। तो अगर इस टाइम पे किसी को ब्रांडिंग में
कदम रखना है, Hmm. तो पर्सनल ब्रांडिंग विल बी अ गुड बेट, क्योंकि लोग कम हैं जिनको काम आता है एंड बहुत सारे लोग हैं जिनको वो काम करवाना है। Amazing. तो राइट। Yeah. So as if now, like we all have seen, businesses are struggling. People are few businesses are crying, shutting down their operations. So what is the situation at your doors? So what are the challenges you have faced? What are the operational changes you have made after this coronavirus pandemic? It's still going on, but I guess most of the problem that are coming in between of like March to like October, that was totally different. So what are the challenges you have faced? Okay. See, we didn't really face any big problems because of COVID. There was just one big problem. We were setting up an event in April, Mhm. जो कि एक बहुत ज़्यादा बड़े बजट पे होने वाला था, वो कैंसिल हो गया। तो दैट वाज़ अ वेरी ह्यूज टर्निंग पॉइंट अगेन, नेगेटिव वे में, क्योंकि वी वर होपलेस। सब कुछ रेडी हो गया था, हम लोगों के पास फंड सैंक्शन हो गए थे, हम लोगों की कमिटी से बात हो चुकी थी, सब कुछ हो गया था एंड वो कैंसिल हो गया। तो असाइड फ्रॉम दैट थिंग्स हैव बीन गोइंग प्रीटी वेल, क्योंकि उस चीज से जैसे ही कोप अप किया, लेट्स से Mhm. 10-15 दिन के अंदर वी वर बैक टू वर्क, के इस चीज के पीछे रोते नहीं बैठ सकते, बिकॉज इट्स अ वायरस। आपको अज्यूम ही नहीं कर सकते हो ये जाएगा नहीं जाएगा, कितने टाइम में जाएगा। तो 10-15 दिन रोए उस चीज को लेके, देन वी वर बैक टू वर्क एंड इट्स द फिल्म प्रोजेक्ट के साइड में उस टाइम पे दिमाग में आया कि लोग हम लोगों को रीच आउट कर रहे थे, नॉट बिकॉज़ ऑफ उन लोगों को पार्टिसिपेट करना है। लोग रीच आउट कर रहे थे कि क्या आप हमारे लिए मार्केटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं? क्योंकि हमें आपका टेक्निक्स अच्छा लग रहा है, जिस टाइप से आप हमें रीच आउट करते हो, Mhm. जिस टाइप से आप मार्केट कर रहे हो खुद को, तो क्या आप अ, हमें अपना क्लाइंट बनाओगे? तो दैट वाज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। वो जो डेटा सामने आता जा रहा था लोगों का, फ़िल्टर होता गया, 1 आया, 2 आए, 5 आए, 10 आए एंड देन वी वर लाइक कि ओके बॉस, ये किया जा सकता है। तो हम Mhm. लोगों ने कोविड का पूरा टाइम, जिस टाइम पे पूरी दुनिया बंद थी, वो पूरा यूटिलाइज़ किया था इन द वायर फ्रेमिंग, इन द पूरा क्रिएशन में Mhm. of this new idea called Squawk Media Company and how we will implement this whole thing. So we got a great time to think over things and implement them, and right now we are doing really good with it. So I would say कि कोविड का बहाना है। अगर आपने एक पैटर्न नोटिस किया हो मनीष, Mhm. तो टेक्निकली जो डेली वेज अर्नर्स थे, डेली अर्नर्स थे, उनको डेफिनेटली अफेक्ट हुआ है। नो डिबेट्स ऑन दैट पार्ट। Mhm. लेकिन असाइड फ्रॉम दैट, अगर कोई बिजनेसेस रन कर रहा है, नॉट शॉप्स अगेन, क्योंकि शॉप्स का Yeah. लॉस बहुत ज्यादा हुआ है, बिजनेस जो कि डिजिटल जा रहे हैं, अ, वो आई थिंक उनके बहाने हैं अगर वो बोल रहे हैं कि कोविड की वजह से लॉस हुआ हमारा। क्योंकि आप दुनिया की बड़ी से बड़ी डील्स का अगर डेटा उठा के देखोगे, That तो happened. आई थिंक 2020 वाज द ईयर जिसमें सबसे ज्यादा एक्सचेंज ऑफ ट्रांजैक्शंस हुआ है पूरा वर्ल्ड वाइड। Agree. बी इट जियो का, या फिर बायजूस बिकेम यूनिकॉर्न फॉर द फोर्थ टाइम इन इंडियन Mhm. मार्केट। पेटीएम ने रेस किया अगेन एंड बहुत सारी चीजें हुई हैं जो कि 2020 में ही हुई हैं। एंड आई थिंक ये अगर कोविड नहीं होता ना, तो प्रैक्टिकली ये अगले 10 साल और नहीं होता। कोविड ने, लोग ऐसा पता नहीं क्यों सोच रहे हैं कि 10 साल पीछे लेके आए इंडिया को, बट व्हाट आई थिंक, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू एंड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगले 2 साल में इंडिया 10 साल आगे निकल जाएगा, क्योंकि लोगों ने रिमोट वर्किंग हैबिट में बना ली, जो कि वर्ल्ड वाइड इम्प्लीमेंट हो रहा था, इंडिया में नहीं हो रहा था। Mhm. तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि रिमोटली मिनेश, यू कैन हायर मी, Hmm. यू कैन, आई एम सिटिंग इन भोपाल, यू आर सिटिंग इन इंदौर, लेट्स से आई कैन गेट अ क्लाइंट फ्रॉम यूएस Exactly. just by remote working. I can get and the best employee in the world from, let's say, uk। मुझे ऑफिस बुलाने की जरूरत नहीं है, Yeah. मेरा कॉस्ट कटिंग हो रहा है, आई कैन पे हिम वेल। Yeah. सो अगर देखना चाहें तो उसके पॉजिटिव्स बहुत सारे हैं। Yeah, so you touched the point of Byju's as well. So it's an ed tech firm, right? So back at those days, I Right. was working with them as well. So there's one interview that we have seen of Baiju Ravindram. So the same point he have illustrated that we are planning to reach at this position by 2030, and now in the 2021 we are at this position because of this pandemic. So that's a win-win situation for each and every organization. And Right. yeah, so there are a lot of different challenges of work from home model, remote model, but apart from it, there's a lot of benefits at the same point. So as if now everything I'm done from my end, any great piece of advice you wanted to give to any person out there who is struggling, who wanted to figure out their way, who wanted to do something by their own. So what would you give? What advice you would give to a 20, 30, 13 or 17-year-old?
ऑलराइट, आई विल जस्ट से कि भागो मत किसी एक चीज़ के पीछे जस्ट बिकॉज़ वो चीज़ ट्रेंड कर रही है। किसी को फ़िल्म मेकिंग करना है, किसी को म्यूज़िक में जाना है, कोई डांस करना चाहता है डीआईडी देखने के बाद, तो किसी को उरी मूवी देखने के बाद पायलट बनना है लाइक एयर फ़ोर्स में। तो बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड हो जाती हैं, लोग उसको फ़ॉलो करने लगते हैं अंधे होके। आई विल जस्ट से कि फ़ोकस ऑन वन थिंग एट अ मोमेंट। आप एक चीज़ मतलब सॉरी, आप 4 चीज़ें एक साथ कर सकते हो बट जिस पॉइंट पे वो चीज़ कर रहे हो, उस पे कंप्लीट फ़ोकस रखो आप। प्लस स्टार्टअप की रेस में मत भागो इस पॉइंट पे क्योंकि स्टार्टअप्स बहुत सारे हैं एंड अगर मैं एक रफ फिगर दूँ तो आई थिंक 90% स्टार्टअप्स फेल होते हैं हम्म, एंड द मेजर रीज़न इज़ क्योंकि उनको स्टार्टअप कभी करना ही नहीं था। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि एंटरप्रेन्योर्स प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। मेरा परसेप्शन थोड़ा-सा अलग है। आई फील एंटरप्रेन्योर्स प्रॉब्लम क्रिएटर्स होते हैं। मनीष, हम्म, इफ देयर इज़ अ गाय जो कि कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा है, हम्म, तो उसके ऊपर एक बंदा होगा जो उसका मैनेजर है, जो उसको रोज़ बताता है आपको ये काम करना है या वीकली या मंथली बता रहा है। उस मैनेजर के ऊपर एक सब मैनेजर होगा, उस सब मैनेजर के ऊपर एक टेक लीड होगा। इस हायरार्की का एंडिंग नहीं है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। हम्म, सबके ऊपर कोई ना कोई है, जो कि आपको बता रहा है काम क्या करना है। तो बेसिकली माय अंडरस्टैंडिंग इज़ दीज़ गाइज़ आर द प्रॉब्लम सॉल्वर्स। वी एज़ एंटरप्रेन्योर्स आर हम्म, प्रॉब्लम क्रिएटर्स। हमें बैठ के वो प्रॉब्लम पहले क्रिएट करना है, सॉल्व करना बाद में आता है, राइट। कि क्या नई प्रॉब्लम क्रिएट की जा सकती है, जो कि दुनिया को चेंज कर दे, एलिवेट कर दे हम्म, एक स्टेप ऊपर। cool. That's then you need to change your whole perspective from a problem solver to a problem creator. राइट। Yeah. So amazing. That's it from my end. Anything you wanted to ask from me? Anything you wanted to discuss? So you can go ahead. Yeah, I would love to know how's the scene with this podcast thing. I've been into watching and binging on a lot of podcasts and Mhm. podcasts recently. Mhm. So, how does this thing work? Okay, so I'll share a story of mine, how I started, then I'll tell you the whole insights, analytics, ki kaise kya earning hoti hai, right? So what happened so I'm a very much extrovert person, right? Lockdown hua, I was not able to connect with a lot of people. So I used to attend a lot of meetups, greetings, and बहुत सारे लोगों से मिलता था on a single day. That is not happening. So for me it's a mode for the communication, from other people it's a mode for the education for gaining knowledge. Same goes with me. So my goal is like I want to jump into business and I'm working on that only. So I've created my podcast under the niche of business, sales and marketing and entrepreneurship at the same point. So that's how my podcast started in the March month, when there was like when we are in the peak situation of pandemic, right, of the coronavirus. So at that time I've Right, started this podcast as a source from where I can learn, as a source from where I can communicate with people and I can make good network, right? Let's discuss right, about how podcast work. So podcast is a method. If we talk about personal branding, so personal branding is something like for example, if you're comfortable with camera, so आप YouTube करो. If you're comfortable with writing, then go ahead with the blog post. Then if you're comfortable with your audio, then you should jump into the podcast, right? So this right, podcast are on top from like 10-20 years. But at the same point, जैसा आपने बोला था, it's the same thing, just few addition, few creativity, and with a different name. So for earlier, it was a kind of an excuse. Just say I wanted to start a YouTube channel, but I am very much like I'm shy person. मुझे कैमरा के सामने आने में बहुत I'm hesitating, right? So I can right, get my word out through this podcast, and there's a report. There's an organization named IVM Podcast. So they have a bunch of right, right, podcasts under them. So they have podcasts from Roni Screwwala, Varun Dugriwala. So they have a lot of great people under their roof. So they have released a report recently in December. So illustrating that a podcast is going to rule the media industry. So Spotify का एक डाटा आया था where most of their audience, 30% of their audience are consuming audio content in podcast, and so people wanted to look for the ways कि हम सीख सकें. हम सिर्फ म्यूजिक सुनते हैं, but music is a kind of a enjoyment. Few musics used to right, like give you a big message, but generally while we are driving, while we are working out, while we are doing any sort of activity, let's learn because life is going too fast. There comes the podcast. right,
right? And same goes where the audience is, where there the money flows, their advertisement came. And that's how in between the podcast there's a lot of people going to reach out to you, organizations, and you can feature their name in between your podcast, and they used to charge a really big amount. So you'll be you'll be like shocked how much people can make from just recording their voice and sharing on media platforms. So there's I'll How tell. much is that? Yeah, I'm telling a story. So there is one person, I don't remember his name, but his podcast is Entrepreneurs on Fire. So each and every day he used Okay. to, each and every month he used to share his report on his website कि मैं कितना कमाता हूँ, right? So his report shows that he's making around $120 every single month from the podcast episode, where his expenses is just 5% of the earning. So that's how the big Oh, that's this amazing. industry is. Let's consider an example of Joe Rogan. So peak lockdown, mein there's one Right. news called Joe Rogan have. So Joe Rogan is a podcaster. So he have his podcast on YouTube, on Apple Podcast, right? He don't have his podcast Okay. on Spotify. So Spotify ने Hmm. drill crack करा for I guess $20 million, $200 million. Oh I'm my so sorry. So $200 million में he have removed from YouTube. I guess YouTube अभी भी है, but from other broadcasting platforms, wholesoever God. it will Okay. going to showcase on Spotify. So this is the future. Okay. Okay. I get it. Yeah. So That's so amazing. yeah, so that this is the future, and that's how people can even make a big amount. But of course, you need to deploy a lot of patience, self-awareness, key like what are the topics I'm interested about, and it takes a time to build this big venture based out of just audio creation. Got it. Yeah, so that's it from my end. Yeah, thank you so much for the insights about the podcast, Manish. And I really look forward to build my own podcast someday soon. We're going to meet and then we'll discuss about this. Okay, so 100. yeah, thank you so much for being on to Modernizing Biz podcast. I hope each one of our listeners will get tons of value from this particular episode. And it was really nice conversating with you, buddy. And we'll see you again in some time in a video format as well. Thank you so much, Manish. I loved to be here. Thank you. Hey guys, it means the world to me that you stay till end. I hope you get some value out of this episode. Before going, make sure you do your bit by hitting the follow and subscribe button on whatever platform you're listening it on, whether it's Google Podcast, Apple Podcast, Geo7 or Spotify. Thank you so much once again for tuning into Modernizing Biz podcast.